अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो, इससे पहले हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस किया था। दैट वाज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। और टुडे इट्स द लेक्चर नंबर 14, वी कैन से lecture 14 of gravitation. So here we are going to discuss the time period of satellite. टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल हमने एक सैटेलाइट को पुट किया है इसमें. We put a satellite around the surface of Earth. So let's suppose this is the satellite which we put around the surface of Earth. So we have to calculate the time period. Time period of satellite, time period. That's time taken. That is a circumference divided by orbital velocity. And orbital velocity VO is equal to, हमने इससे पहले कैलकुलेट की थी, that comes out to GR square divided by R plus H raised to R 1/2. ये हमने इससे पहले कैलकुलेट की थी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. तो इसका मतलब है अब हम इसको उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट. तो इसको सर्कमफ्रेंस अब इसका सर्कमफ्रेंस हम निकाल सकते हैं. इसका सर्कमफ्रेंस दैट्स सो T इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई r प्लस h डिवाइड बाय VO की जगह GR स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस h 1/2. तो ये ऊपर आएगा 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2. T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा और इधर रह गया, ये ऊपर आके बन जाएगा R प्लस h होल क्यूब और G का डिवाइड बाय G रेज़्ड टू पावर 1/2. This is the time period of satellite. This is the time period of satellite. Time taken by a satellite to complete one complete cycle, to complete one rotation. So इसके बाद अगर आपको height of satellite, if you are supposed to calculate height of satellite, height, तो हमें h को निकालना होगा. Height of satellite above the surface of Earth. Height of satellite. तो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे. T square is equal to 4 pi square divided by R square R plus H whole cube divided by G. तो R plus H whole cube T square R square G divided by 4 pi square. हमें H चाहिए, हमें यहाँ पर H चाहिए, हाइट ऑफ सैटेलाइट above the surface of Earth. तो इसका R plus H T square R square G divided by 4 pi square raised to power 1/3. R is equal to T square R square G 4 pi square 1/3 और प्लस h माइनस h. नहीं, h हमें चाहिए, h ये माइनस r. This is the height of satellite. This is the height of satellite from the surface of Earth.
तो इसके बाद आपको, इफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, total energy of satellite. Now total energy को कैसे कैलकुलेट करेंगे? What's the potential energy of satellite? U is equal to minus G m divided by R plus H. This is the potential energy, where m is the mass of satellite, capital M is mass of Earth. अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 of mvo square. एंड यू नो ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह हम vo इज इक्वल टू, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के vo की जगह हम उसका वैल्यू देंगे तो दैट विल बी gm डिवाइड बाय r प्लस h स्क्वायर. तो यू नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी में हमें m vo square divided by r plus h is equal to gm m divided by r plus h होल स्क्वायर. ये और ये कैंसल, तो ये और ये कैंसल, तो vo स्क्वायर विल बी इक्वल टू gm डिवाइड बाय r प्लस h. gm divided by vo is equal to gm divided by r plus h. Okay, so this is vo. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, what we have to do, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी that is 1/2 of m vo स्क्वायर की जगह gm डिवाइड बाय r प्लस h. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आएगी that will come gm divided by this twice r plus h. This is the kinetic energy and this is the potential energy. Total energy E is equal to kinetic energy plus potential energy, total energy. तो यहाँ पर the total energy, that's E is equal to minus gm m divided by r plus h plus gm m divided by twice r plus h. So E is equal to minus gm m divided by twice r plus h. This is the total energy. And you know this total energy is negative. It means satellite and the planet is a bound system, because total energy comes out to be negative. So this is the total energy, minus gm m divided by 2r plus h. This is the total energy of satellite around the planet. This was all about the satellite. इसके बाद हमें geostationary satellite, inertial and gravitational mass, इनको डिस्कस करना है. That will be the end of this unit. Thank you.